ओम श्री गजेंद्र मोक्षम। प्रिय भक्तों, व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां अवश्य ही रहती हैं जो कि जीवन में मानसिक तनाव पैदा करती हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए कई उपायों का वर्णन किया गया है, लेकिन ये एक उपाय नियमित रूप से करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। सृष्टि के बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा दुख इस पावन स्तोत्र को श्रवण करने से पलक झपकते ही नष्ट हो जाता है। विष्णु पुराण में गजेंद्र स्तोत्र पाठ के कई लाभ और फायदों के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि अगर नियमित रूप से और सच्चे मन से इसका पाठ किया जाए तो व्यक्ति के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं और मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि इस स्तोत्र के पाठ से या इसे श्रवण करने से भगवान श्री हरि नारायण तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सभी प्रकार के संकटों से, सभी प्रकार के दुखों से और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भक्तों को नियमित रूप से इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप इसका पाठ नहीं कर सकते हैं तो रोजाना पूजा के समय गजेंद्र मोक्ष को श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप सही भक्त नित्य श्रवण करें। आइए श्री गजेंद्र मोक्ष के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गजेंद्र मोक्षम। श्री शुकवाच एवं व्यवसितो विद्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्रवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विद्भातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेद्यदृक्साक्षिभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवार्षया पदं विदुर्जन्तु पुनः को रतिगन्तुमीरुतम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकाव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स मायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां-विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छन्न चिदुष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रक्प्रपन्न पशुपाशि विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वासेन सर्वतनु ब्रह्मणसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते रहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यश्च न संकञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमगनाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मवादिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यं न स्त्रीशो न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहं मिहान्मुया किम् अनन्तवहिश्चावृतये भयोन्या इच्छां कालेन यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगिरन्धति कर्माणो हृदयोगिविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्त्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्दिया हतं तन्दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमित्तोऽस्म्यहं श्रीशुकदेवोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमाना नैते यदुपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलां रमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं सम्यदिविजयः स संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूयमानः
चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरेश्वरबले निगृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृष्याम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम् ईशुकोवाच एवं व्यवसितो विद्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्रवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विद्धातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेद्यदृक्साक्षिभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवार्षया पदं विदुर् जन्तु पुनः को रतिगन्तुमीरुतम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकाव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स मायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां-विधुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छन्न चिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रक्प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वासेन सर्वतनुभ्रन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते रहते नमस्ते
आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यश्च न संकञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमगनाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मवादिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यं न स्त्रीशो न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेध शेषो जयतादशेषः जिजीविषे नाहं मिहान्मुया किम् अनन्तवहिश्चावृतये भयोन्या इच्छां कालेन यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगिरन्धति कर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्त्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्दिया हतं तन्दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमित्तोऽस्म्यहं श्रीशुकदेवोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानाः नैते यदुपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलां रमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं सम्यदिविजयः स संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तःसरेश्वरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृष्याम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम् श्रीशुकोवाच एवं व्यवसितो विद्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्रवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं
निजमाययार्पितं क्वचिद्विद्भातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेद्यदृक्साक्षिभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवार्षया पदं विदुर् जन्तु पुनः कोरति गन्तुमीरुतम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकाव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम्यविदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छन्य चिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागमो स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रक्प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वासेन सर्वतनुभ्रन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते रहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यश्च न संकञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमगनाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मवादिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषा
तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गा स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यं न स्त्रीशो न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेध से सो जयतादसे सह जिजीविषे नाहिं मिहान्मुया किम् अनंत वहिश्चावृतये भयोन्या इच्छां कालेन यस्य विप्लवः तस्यात्म लोकावरणस्य मोक्षम् सोहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगिरन्यति कर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्त्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्दिया हतं तन्दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमित्तोऽस्म्यहं। श्रीशुकदेवोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णति निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यदुपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलां रमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं संविधिविजयः स संस्तु वद्भि छन्दोमयेन गरुणेन समूयमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरेश्वरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृष्यान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम्। श्रीशुकोवाच एवं व्यवसितो विद्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्रवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विद्भातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेद्यद्रक्साक्षुभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर् जन्तु पुनः को रति गन्तुमीरुतम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकाव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम्यविदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छन्न चिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागमो स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रक्प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय श्वासेन सर्वतनुब्रह्मणसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते रहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न संकञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमगनाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मवादिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यं न स्त्रीशो न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहं मिहान्मुया किम् अनन्तवहिश्चावृतये भयोन्या इच्छां कालेन यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगिरन्यति कर्माणु हृदयोगिविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्त्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्या हन्दिया हतं
तन्दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तमित्तोऽस्म्यहं। श्रीशुकदेवोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमाना नैते यदुपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलां रमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवासा स्तोत्रं संविधिविजयः स संस्तु वद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्युगमदास यतो गजेन्द्रा सोऽन्तः सरेश्वरबलेन गृहीतयातो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृष्याम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहारा ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणां। तीस्तुपवाच एवं व्यवसितो विद्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्रवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विद्भातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेद्यदृक्साक्षिभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवार्षया पदं विदुर् जन्तु पुनः को रतिगन्तुमीरुतम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकाव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स मायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां-विधुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय
नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छन्य चिदूष्मपाय तच्छोभ विस्फूर्जित मानसाय निष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रक् प्रपन्न पशुपाशि विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय श्वासेन सर्वतनु ब्रह्मणसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते रहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रह वित्त जनेषु शक्तैर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिश्व हृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यश्च न संकञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमगनाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मवादिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यं न स्त्रीशो न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेध से सोजयतादसे सह जिजीविषे नाहं मिहान्मुया किम् अनन्तवहिश्चावृतये भयोन्या इच्छां कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगिरन्धति कर्माणु हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्त्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्दिया हतं तन्दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमित्तोऽस्म्यहं श्रीशुकदेवोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमाना नैते यदुपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलां रमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवासा स्तोत्रं सम्यदिविजये स संस्तुवद्भि छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तःसरेश्वरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृष्यान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम् श्रीशुकोवाच एवं व्यवसितो विद्या समाधाय मनोहृदि
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्रवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विद्भातं क्वच तत्तिरोहितम्। अवेद्यदृक्साक्षिभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। तस्मात् तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवार्षया पदं विदुर् जन्तु पुनः कोरति गन्तुमीरुतम्। यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। चरन्त्य लोकाव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे। नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय। नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय। नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छन्य चिदूष्मपाय। तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागमो स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रक्प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। श्वासेन सर्वतनुभ्रन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते रहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यश्च न संकञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमगनाः।
तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मवादिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यन्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यं न स्त्रीशो न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहं मिहान्मुया किम् अनन्तवहिश्चावृतये भयोन्या इच्छां कालेन यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगिरन्यतिकर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्त्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्दिया हतं तन्दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमित्तोऽस्म्यहं श्रीशुकदेवोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यदुपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलां रमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं सम्यदिविजयः स संस्तु वद्भि छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरेश्वरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृष्यान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम् श्रीशुकोवाच एवं व्यवसितो विद्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्रवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विद्भातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेद्यदृक्साक्षिभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवार्षया पदं विदुर् जन्तु पुनः कोरति गन्तुमीरुतम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो
दुरत्ययानुक्रमणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकाव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स मायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरान्विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छन्न चिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागमो स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रक्प्रपन्न पशुपाशि विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वासेन सर्वतनु ब्रह्मणसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते रहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न संकञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमगनाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मवादिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यं न स्त्रीशो न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहं मिहान्मुया किम् अनन्तवहिश्चावृतये भयोन्या इच्छां कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म
प्रणतोऽस्मि परं पदं योगिरन्धति कर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्त्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्दिया हतं तन्दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमित्तोऽस्म्यहं। श्रीशुकदेवोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमाना नैते यदुपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलां रमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवासा स्तोत्रं सम्यदिविजयः संस्तु वद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदास यतो गजेन्द्र सोऽन्तःसरेश्वरबलेन गृहीतयातो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाहकृष्याम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणां श्रीगजेन्द्रमोक्षं सम्पूर्णम्।